Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories from this week's episode. Torrential rains and floods continue to better life in illegally occupied Gilgit-Baltistan. Shafiqur Rahman from Kulgam, soon to be youngest PhD holder in hotel management. Youngsters in Katwa district reaping profits with honey production. And later in a section of Incredible India, we'll take you to soak in the Janmashtami festivities across the country. People of Pakistan-occupied Kashmir have been living as second-class citizens for years now. While the region is abundant with natural resources and rich flora and fauna, its ability to attract tourists is neglected by authorities who are busy filling up their own coffers. The lack of basic infrastructure and transportation makes it hard for tourists to visit the otherwise renowned tourist destinations of the area. One such area is the Chikar Valley near Muzaffarabad, where the pathetic condition of roads and sheer ignorance of authorities is making it difficult for the tourist to visit. Blessed with an abundance of natural beauty, Pakistan-occupied Kashmir can be one of the most visited tourist places in the world. But to its dismay, neither the government nor the authorities are interested in the infrastructural development of the region. The poor condition of roads is enough to hamper the tourists from visiting the region. While few roads remain blocked for weeks, many have become a death trap for commuters due to their appalling condition. Chikar Valley in POK, which has a dense forest cover and a beautiful lake, which could be a famous tourist spot, is also dealing with the same issues. यहाँ एक चीज़ की कमी है कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, अच्छी रोडें ना होने की वजह से यहाँ पे स्याह आने का सोच ही नहीं सकता। स्याह वहाँ पे जाता है जहाँ पे अच्छी सड़क हो और ताकि पहुँचना आसान हो, लेकिन यहाँ पे सड़कें बिल्कुल किसी काम की नहीं है और यहाँ पे जो भी गाड़ी आती है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचती है। तो इस इलाके में अगर सड़कों का जाल बिछाया जाए और जो पहले से मौजूद सड़कें हैं उनको सही किया जाए तो इस इलाके में सियाहत जो है वो बहुत परवान चढ़ सकती है और इस इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इस इलाके में सड़कों का हाल देखें तो आप खुद ही सड़कें खुद अपनी ज़बान से बता रही हैं कि इलाके में कोई काम नहीं हुआ। अगर इलाके में काम हुआ होता, सड़कें हुई होती तो आज आप देखते यहाँ पे स्याह आए होते हैं और आके इस इलाके की खूबसूरती से वो माजूज होते हैं। While on one hand the area suffers from the pathetic condition of roads, crime rates are also spiking high in the region. Illegal practices of smuggling are constantly increasing in the area, with authorities paying no heed to the situation. Because of the forest cover, timber mafias are becoming a threat to the region that smuggle not just timber but other things as well. Due to the continued ignorance of the authorities and rampant corruption, smugglers and mafias tend to escape the situation instead of being punished for their crimes. खूबसूरती के एतबार से बहुत यूनिक किस्म का ये इलाका है और इस इलाके में जंगलात जो हैं उस इलाके की पहचान है और ये इलाका एक स्मगलिंग के बारे में भी मशहूर है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा कश्मीर के इलीगल स्मगल होती है और क्योंकि अगर गैर कानूनी सबसे ज़्यादा जंगल कटते हैं तो ये शिकार करना है। For the last 7 years, Pakistan-occupied Kashmir has been suffering under the misrule of Pakistan. To date, it has only plundered its resources and has only shot down an ecologically abundant and economically prospering region
into the most neglected and backward region of South Asia. And next we move to illegally occupied Gilgit-Baltistan, where floods continue to wreak havoc. Many low-lying areas have submerged and people are in a state of distress. Even in such a disastrous situation, authorities have failed to provide the necessary help. Have a look. Flash floods have taken several areas of Gilgit-Baltistan under their grip. Many low-lying areas have submerged. People have lost their homes and life is in complete shambles. Authorities have either failed to provide any help, or if they have provided, it hasn't been of much use. People now have even stopped asking for help from the administration. They have taken it upon themselves to remove the debris and deal with the situation. नर्सरी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, स्कूल का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और 7 लोगों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी तक कोई गवर्नमेंट का कोई लोग इधर नहीं आया, सिवाय एक तहसीलदार साहब इधर आया, वो विजिट करके गया। तो यहाँ के स्कूल का हिस्सा था, वो हमारे पीएसएफ के लड़कों ने बहुत मेहनत करके सुबह से लगे हुए थे और स्कूल का हिस्सा काफ़ी बचा है। और नर्सरी मेरा ख्याल में पूरा डिमेश हो चुका है और उससे नीचे भी लोगों का ज़मीन है, मेरा अपना ज़मीन है, वो भी सत्यानाश किया है। तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट आके देखे तो हमारा नुकसानात का खुद जायज़ा ले। It's not the first time that floods have hit the region. Almost every year, the same situation arises, but even then, the authorities have made no learning. People are forced to leave their homes and shift to other safe places to protect themselves. Areas like Guru Jaglot and Ishkuman Valley have faced immense destruction that has severely impacted the locals. यहाँ जो रिहायशी थे दरियाए हुंजा के करीब, उनको साथ में ही एक दास है गुरु दास, वहाँ पर टेंट विलेज कायम करके उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और जिन जिन बिल्डिंग्स में जो सामान थे, जो कुछ उठा के ले आ सकते थे, वो अभी शिफ्ट कर रहे हैं। और हर तरफ आप देख रहे हैं कि तबाही है, लोग खौफजदा है। यहाँ पे गवर्नमेंट फिश फार्म्स थे और उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो नुकसान ये हुआ है कि जो पावर सिचुएशन है, यहाँ से बिजली की जो सप्लाई है वो पूरे गिलगित डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से है। बहुत सारे ट्रांसमिशन जो लाइन्स है वो कट चुके हैं और जो गुरु जगलोट से जो बिजली की जो सप्लाई है वो भी मुनक़ता है। Suffering the fury of nature, locals who are seeking fundamental assistance from the authorities have received mere condolences in the name of assistance. Such disasters could also be attributed as man-made, as it is due to the continuous intervention of Islamabad in the illegally occupied Gilgit-Baltistan, which has caused massive disturbances in the ecological balance. The melting of glaciers is one of the consequences of the environmental degradation rampant in the region. And next we move on to Jammu and Kashmir, where over the past few years, youngsters are showing a keen interest in hotel management courses. From making a name in the hotel business to excelling in academics, they are proving their mettle in every field. Shafiqur Rahman is the latest one to join the list. Let's take a deep dive into his journey.
Currently working as a faculty at the Institute of Hotel Management in Srinagar, Shafiqur Rahman from Kulgam district is soon going to become the youngest PhD degree holder in Kashmir Valley. Having completed his BSc in 2016, Shafiq decided to opt for PhD as soon as he completed his Masters in Food Production and Hospitality. He also did industrial training in reputed hotels. As he was very much interested in cooking, his main focus was the kitchen department. मैंने बीएससी कंप्लीट किया है इन 2014। तो जो 3 साल मेरे रहे हैं, मेरा ज़्यादा फोकस रहा है किचन डिपार्टमेंट ही। तो तीनों साल मैंने ज़्यादा काम भी किचन में ही किया है और मेरा जो मेन फोकस था कि मैं किचन में आगे जाऊं। देन आई वुड डायरेक्टली ज्वाइन द मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट, जो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से किया है ड्यूरिंग 2014 टू 2016। तो ड्यूरिंग द मास्टर्स मेरे सारे अप्रिसिएशन मिले हैं क्योंकि मैं किचन में ऑलरेडी ट्रेंड था। तो एट दैट टाइम तो मैंने फिर से फैसला किया कि मैं आगे क्यों ना जाऊं, मैं फैकल्टी बन जाऊंगा। मेरा एक ड्रीम था कि मैं पढ़ाऊं कहीं पे। तो आफ्टर द मास्टर्स डिग्री मैंने ज्वाइन किया है पीएचडी इन हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम एमईटी यूनिवर्सिटी जयपुर से। ड्यूरिंग द बीएससी मैंने इसमें भी एक ट्रेनिंग किया, दैट्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो वो 6 महीने की रह गई है जो मैंने ताज से किया है। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बहुत टफ रही है क्योंकि पहले ही सुबह को बोला जाता है कि एक प्याज की बोरी छिलनी है आपको, क्योंकि किचन में था मेरा फोकस। तो करते थे, हम दिन भर रोते थे उस टाइम। Talented since childhood, Shafiq also qualified for the engineering entrance test and joined Baba Ghulam Shah Badshah University in Rajouri. But after some time, he left the course as he wanted to pursue hotel management. His father also supported him in his dream. बेसिक जो उसमें बैकग्राउंड है वो पेरेंट्स का ही है, फादर का। मैंने पहले जब 10+2 किया उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया है इंजीनियरिंग के लिए। तो मैं सिलेक्ट भी हुआ है बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में। मैंने 1 महीना भी दिया है वहाँ पे। आफ्टर दैट के फादर ने न्यूज़पेपर में देखा है कि ऐसे होटल मैनेजमेंट के एडमिशन्स हो रहे हैं, तो मैं वो छोड़ के होटल मैनेजमेंट में आ गया। Over the years, the craze for hotel management has gained impetus amongst the youngsters of Jammu and Kashmir. Many enroll themselves in different courses and after completion open their own ventures. Several students taught by Shafiq have also set up their own businesses. अभी तक मैंने 7th 8 ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है वो पढ़ाए हैं, निकाले बैच यहाँ से। तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए जिन्होंने अपना ये वेंचर खोला है। अगर हम बात करेंगे डिफरेंट बेकरीज की बात करेंगे, अपने बच्चों ने खोले हैं, या रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे, तो बच्चों अपना भी कुछ भी कर सकते हैं एज डिफरेंट थ्रू डिफरेंट मोड्स अपना खोल सकते हैं और अपना रोजगार कमा सकते हैं वहाँ पर। Shafiq has struggled and worked very hard to achieve his dream. Having become the youngest in Valley to pursue a degree in hotel management, he is now passing his glory to other youngsters and is preparing them for a better future. Well, Jammu and Kashmir is one of the most suitable beekeeping places in India owing to its natural resources and favourable climatic conditions. Tapping this potential, several youngsters across the territory are now investing in beekeeping. Here we bring you the story of one such young lad from Kathua's border area who is reaping honey-sweet success. This is Suresh Kumar, who hails from the border area of Hiranagar in Kathua. Kumar is actively involved in the process of honey production for the last few years.
Starting from 5 bee boxes which he bought on subsidy from the Agriculture Department, today he has possession of more than 1,000 bee boxes. Along with it, Kumar has also established a honey processing unit in which he produces 5 to 6 quintals of honey per day. Around 12 varieties of honey are processed in his unit. At present, Kumar has an annual turnover of 80 to 90 lakhs and is earning a profit of 10 to 15 lakhs. जैसे हमने शहद प्रोडक्शन करते थे तो हमें जो रेट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। हमसे ट्रेडर आते थे, खरीद के ले जाते थे सस्ते भाव में। हमने मतलब 50-55 में भी अपना शहद बेचा। और उसके बाद हमने सोचा कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्यों ना हम खुद की सेल ही करें। और मैंने खुद का अपना IFSS लिया और अपनी प्रोसेसिंग यूनिट बनाई। प्रोसेस करने में अगर हम मैनुअली करते हैं तो टाइम उसमें काफ़ी वेस्ट होता है। और मैंने सोचा कि अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। मैंने प्रोसेसिंग यूनिट मतलब ख़रीदा और आज मेरे प्रोसेसिंग यूनिट में 1 घंटे की 60 किलो इसमें प्रोसेस होता है। और हमने मतलब जो शायद हमारा 150 रुपये किलो बिक रहा था वो हम अब 400 रुपये किलो बेच रहे हैं। और हमने कई वैरायटियाँ तैयार करी हैं, जैसे अजवाइन हो गया, मेरे हाथ में भी आप देख रहे हो, तुलसी का शहद है, अजवाइन का है, तुलसी का है। मतलब 11 से 12 वैरायटी हम तैयार कर रहे हैं। Kumar has also developed a cooperative society in which around 200 people are working with him. These people are not just from Jammu and Kashmir but from other states as well. Today, Kumar is employing around 25 to 30 people from his area itself, and through the cooperative society, he aims to provide employment to several other unemployed youth. हमने एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। उस सोसाइटी में कम से कम हमने 200 से ज़्यादा लोग मतलब जोड़ रखे हैं। वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब किसी ने 10 बक्से भी रखे हैं और किसी ने 200 भी रखा हुआ है। और हमारी है कि ऐसा कोई जो बेरोज़गारी से जूझ रहा, कोई भी ऐसा मतलब जवान लड़का कोई ना बचे जो बोले कि मैं बेरोज़गार हूँ। जो भी बोलता है जो मैं बेरोज़गार, तो हम बोलते हैं हम उसे काम देंगे, आप हमारे साथ आ सकते। जैसे शहद निकालना, माइग्रेशन करनी, और जैसे सफाई वगैरह करनी डब्बों की। हाँ, बस यही है, ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। मुझे तो सबसे बढ़िया लगा ये। एक तो कोई चिंता नहीं, और ना ही इसमें ये कि भाई पैसा रुक गया, जैसे माल दो और पैसे अकाउंट में डल जाते हैं। The nectar that bees gather from meadows, orchards, woodlands and gardens is regarded as one of the best in the world. Jammu and Kashmir, being home to all of them, with its land requiring very less pesticides, creates a favourable atmosphere for producing organic honey. Considering the same, many people across the Union Territory are embracing honeybee farming. ये सुरेश भाई भैया हैं, इनके साथ काम करते हैं मिलजुल के। ये बी कीपर है, इन्होंने एक अपना यूनिट लगाया है प्रोसेसिंग का, हनी का। ये हम सारे इन्होंने KVI के साथ मिलके 10 बक्से दिए, इनको ग्रुप भी बनाया इन्होंने। वो पेटियां भी दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम चल रहा है इनका। यूनिट लगने से एक तो बेरोजगारी दूर होगी, दूसरा है कि ये काम दे रहे हैं लेडीज को भी ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं बी कीपिंग का, कि इसमें आ जाओ आप भी करो, क्योंकि बी कीपिंग में लेडी भी काम कर रही है बढ़ चढ़ के। तो हमारे इधर के लोग हैं कुछ डरते हैं, भी काम मक्खी हमारे को लड़ेगी, ये करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, जब काम करेंगे तो पैसा आएगा। पैसा तो मेहनत करके ही आएगा, बिना मेहनत के तो पैसा आ नहीं सकता।
The authorities in Jammu and Kashmir have also been taking a number of initiatives to give a boost to the beekeeping industry. In Kashmir division, there are 70,000 bee colonies, but the government is now planning to take the number to 7 lakh in the next 5 years. That could generate employment for 1.14 lakh families. In the Jammu division, the government has set up a honey processing unit with 100 kilograms capacity and has registered 340 beekeepers for the facility. Jammu and Kashmir is estimated to produce about 70 metric tons of honey annually. And this amount is bound to increase in the coming years as a number of youngsters in the territory are opting for honeybee farming as a source of livelihood. The reason is, it does not need much investment apart from pollen and nectar from flowers, which is easily available in the territory. Being a highly spiritual country, festivals are at the heart of people living in India. The country celebrates a number of festivals throughout the year that offers a unique way of seeing its culture at its best. So today in our section of Incredible India, we'll take you to witness the celebrations of this year's Janmashtami festival, which was observed with great zeal across various parts of the country. The chants Hare Krishna resounded across various parts of India as the country celebrated the most auspicious Janmashtami festival. Marking the birth of Lord Krishna, who is also believed to be the 8th incarnation of Lord Vishnu, the festival falls on the 8th day of Hindu month of Bhadra, which is usually in August or September. Every year, the festival is celebrated with huge grandeur all over the country. While at many places it is celebrated by setting up a stage where an idol of Lord Krishna is enshrined in a decorated swing. In a few others, it is commemorated by organizing Dahi Handi, in which people make human pyramids and try to break a pot of curd at the top. हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैप्पी है हम लोग। 2 साल के बाद हम लोग वापस आए हैं और ये हमारी फर्स्ट हंडी है यहाँ की, जो हर साल हम लोग ही यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। Much enthusiasm is seen in the holy cities of Mathura and Vrindavan, which are well known for their association with Lord Krishna in Hindu mythology. The ceremony started at midnight as the Lord was born at the stroke of midnight and are performed till dawn. There are about 400 temples in Mathura that come to life on this day, which makes Janmashtami of Mathura one of the best in the world. ठाकुर जी का जो जन्म है एक दिन पहले होने की जो यहाँ प्रथा है वो आदिकाल से है। इसमें क्या है कि सप्तमी की रात को जब रोहिणी नक्षत्र आता है तब ठाकुर जी का होता है। Meanwhile, in the capital New Delhi and Delhi NCR, lakhs of people thronged the ISKCON temple to pay their obeisance to Lord Krishna. Well known for their Janmashtami celebrations, the temples observe the occasion with music, dance, Vedic cultural activities, kirtan and much more. लॉकडाउन की जो दुखदायी घड़ी थी अब वो खत्म होती दिख रही है, इसीलिए इतना जोश और उत्साह है हमारे श्रद्धालुओं में, भक्तों में कि आप सुन कि रात भर जागे रहे सिर्फ दर्शन आरती के लेके। तो मुझे लगता है कि 8-10 लाख
लोग आने की संभावना है। यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है इस्कॉन में। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक कीर्तन होता है जिसमें बहुत आनंद आता है सबको और सब बहुत अच्छे से मनाते हैं। और साथ ही यहाँ पे नृत्य भी होती है और प्रसादम भी होता है और साथ ही अभिषेक भी होता है कृष्ण भगवान जी का। Processions are also taken out in a few parts of the country as part of Janmashtami festivities. In the cities of Kerala, children dressed as Lord Krishna and other mythological characters at the procession attracted devotees and onlookers. Recreating a Vrindavan scene and an Ambati scene, you know. So we are celebrating because God Krishna, Lord Sri Krishna is the icon of Dharma, and he is the man who has propagated the ideal of Dharma through his Bhagavad Gita. And in Dharma, we see all the values conglomerated. Indians have been celebrating Janmashtami from times immemorial and has a huge significance in the Hindu culture. The festival is also said to be a celebration of good over evil, as Lord Krishna is believed to have come to earth to destroy the evil king called Kansa, who ruled some parts of the northern Indian region with Mathura as his capital. Well, that's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.